Hello everybody, we'll be studying about drowning. Okay, so what exactly is drowning? So it's just submersion, okay, your submersion inside or under some liquid. Obviously, you can't get submerged inside water, right? Submersion matlab doobna. But when we are in a bathtub, okay, we are in a bathtub or we take a dip in the Ganges, okay, do you think we're actually drowning? No, we're not. So there is also one more element to the definition, and that is submersion under liquid plus what? Plus there should be respiratory distress or impairment. Respiratory impairment, okay? So respiratory impairment. So these are the two elements of the definition of drowning. So drowning is nothing but submersion under liquid plus what? Respiratory impairment. Okay, now we'll go to the types of drowning, which is important. So drowning was previously described as immediate death secondary to asphyxia, okay, and that was while being immersed in a liquid, usually water, like I just told you. But the definition that I just told you, it excludes other aspects of drowning, that is aspiration is also a kind of drowning. Aspiration of what? Aspiration of, it could be blood, it could be meconium, it could be any kind of what do you say, saliva, water, food, it could be anything, right? So the definitions that I just talked to you about did not include the term, what did I say? Aspiration. Exactly. So aspiration is also a kind of drowning. Okay. Okay. Now we'll come to the type of drowning. So type of drowning may, let me choose another color. Yeah. So type of drowning, we divide drowning into primarily into typical or wet or primary drowning. Okay, this is one kind of drowning, and the other one is atypical. Okay, atypical drowning. So what did I just say? Typical, wet, primary drowning, and atypical drowning. So typical, atypical. And what about typical drowning? So in typical drowning, it's a normal course of action that happens. Okay, like a person, okay, he's underwater, and if the person is underwater, what will happen to his lungs? This is the lungs, for example. This is the bronchi and this is the lungs. So here the water will go inside as usual, obviously. It's going to go inside. It's going to go inside both the lungs. It will fill up the alveoli. It will cause edema. A lot of other things that we'll talk about. Now this is the entrance of the lungs. Hai na? At the entrance of the lungs, for example, the person is somewhat like this. His nose, his mouth, his eyes, and that person is gasping for breath, है ना? So this, here we have the air, which is O2, and here there's an air water interface. This is the air water interface. This whole thing, it is the air water interface. This is air on one side and water on one side, and exactly the same air water interface continues into his ट्रैक्ट विच इज़ इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी उसका क्या है? एयर वाटर इंटरफेस है, यानी कि मुंह के बाहर एयर है, मतलब मुंह के ऊपर एयर है और नीचे पानी, ऐसे देयर इज अ इंटरफेस. सो इन दैट सिचुएशन व्हेन देयर इज एन एयर वाटर इंटरफेस, O2 will not get diffused. Oxygen won't be able to get diffused as effectively as how it would have been diffusing if it was air interface. So for effective diffusion of O2, there has to be an air interface, okay, unless we are fishes, obviously. Because fishes have the ability, they have gills, they can take in the dissolved oxygen as well, but we cannot take in the dissolved oxygen. Okay, so because our bodies are huge and there are a lot of cells that the oxygen has to support, so air interface is essential. It is absolutely essential, okay, for the oxygen to dissolve or the oxygen to diffuse. So in the typical or wet drowning, we have
further two types of drowning. So let us just quickly revise what are the two kinds of drowning that we studied. So drowning, it is divided into what? It is divided into typical and atypical, right? Now in atypical and typical also there's further subtypes. So we'll start with typical drowning. So typical drowning के subtypes क्या है? As simple as that. Freshwater drowning, and brackish water drowning, or it's also known as salt water drowning. जहाँ पे नमक ज़्यादा है वहाँ पे the person is drowning. Okay. Atypical drowning is also divided into few subtypes which we'll be talking about later. Okay. So what is freshwater drowning and saltwater drowning? As the name suggests, freshwater drowning is nothing but drowning in freshwater bodies, which is river, lakes, and all those things, right? So freshwater drowning is drowning in water bodies, drowning in water. We're talking about freshwater drowning, which is hypoosmolar. Hypoosmolar, which means hypo. We use the word hypo, which means it has a lower osmolarity. So here the salt content is less. Usually it is less than that of normal salt content in our body. So it's around 0.6%. While isoosmolar is, you must have studied, right? जो saline infusion हम देते हैं वो क्या होता है? 0.9% saline होता है ना वो. So that is the saline infusion that we give to a person with shock or other hypovolemic conditions. So in cases of freshwater drowning, it is 0.6% NaCl. And in cases of salt water drowning, what is it? In salt water drowning, it is around 3% to 4% salinity NaCl. तो इतना ज़्यादा नमक होता है उसमें. Okay, so what is the impact? This difference in both. Okay, so what happens if there is freshwater drowning or there is brackish water drowning? What is the difference? So what happens is that in cases of freshwater drowning, the RBCs, for example, this is the RBC. Okay, I should have made it in red. Okay, anyways, so in the RBCs the water will enter. Okay, now what will happen when the water enters the RBCs? What will happen when the water enters the RBCs? Just imagine RBCs to be a balloon. So the balloon will swell up. Okay, the balloon is gonna swell up. अब एक balloon कितना ही swell कर सकता है? It has a limit, right? At a point when it is when the balloon has swollen up with water, for example, this is the water, it's filled with water. Now what happens is, at a point it will burst. Yeah, it will burst. Now you know our RBCs are anucleated, that is, it does not have a nucleus, right? So that's why I have not drawn a nucleus. So it will burst and all the hemoglobin will come outside. All the hemoglobin will come outside, all the enzymes, all the things will come outside. Now why did I specifically talk about hemoglobin? Now this hemoglobin has a significance. This hemoglobin further goes and stains the endocardium of the heart. So the heart का जो endocardium है उसको it will go and stain. So that's why I was talking about hemoglobin. So these RBCs which burst, these RBCs that burst due to the water coming in. You know why the water went inside the RBCs and not outside the RBCs is very simple. You must have studied in 12th standard also. So usually water travels from high concentration to low concentration, right? High concentration of water. I'm talking about of water to low concentration. This is called osmosis. What is it called? It's called osmosis. Now what happens is, because outside the salinity is 0.6% as in freshwater drowning, and inside it is 0.9%. What happens is 0.9% is NaCl. NaCl is 0.9%, not water. Okay, NaCl is 0.9%. यानी कि यहाँ पे ज़्यादा NaCl है. कहाँ पे? Here NaCl is more. So if NaCl is more here, what do you think water will be? Water will be less here, है ना? But water will be more here because the NaCl is less here. So that's why
पानी जहाँ ज़्यादा है, so this is where the water is more and this is where the water is less. So the direction of flow of water will be from more to less. तो 0.6% to 0.9% में जाएगा S, इसलिए your whole RBC will swell up. Okay, so this is how you understand what happens to the RBCs. तो RBCs का चक्कर समझ आ गया. What happens now you tell me what happens at the alveoli. तो RBCs की बात कर ली, बट alveoli से ब्लड में भी तो जाना है ना, तो लंग्स में से ब्लड में गया, ब्लड में पानी जाएगा. सो लंग्स, दिस इज द लंग्स. नो वेट, आई मेक इट, लेट्स मेक इट इन ब्लैक. या, सो this is the lungs and these are the alveoli. For example, I made them very very big, and at the alveoli, you know, there's a alveolar blood barrier kind of thing. Yeah, so there's a capillaries that run beneath the alveoli. So what do you think happens? So water will travel from the mouth, from the pharynx into the larynx, and it will reach the alveoli. Now since the water is at how much salinity, we just talked about the salinity, right? So the water is at 0.6% salinity, but inside the blood the water is at, or the water concentration is, or the salinity is 0.9% inside the blood. So now what will happen? From the alveoli, the water will be seeped into the blood, है ना? तो blood will be filled with water now. And this blood will get engorged with water. Now this blood, it gets engorged with water. Now here we have the RBCs that are floating, right? Because the RBCs are floating, now these RBCs will get exposed to the high levels of water, as I just told you. So here H2O, है ना, high levels of water will be exposed, and इस तरीके से what will happen, all the sequelae that I just talked to you, ऊपर ये जो सब बताया था मैंने, वो सब होगा. Okay, so fresh water से it will go, it will burst the RBCs, and HB will come outside, and that HB will go and stain the endocardium of the heart. It will go and stain the endocardium of the heart. Okay, so after what happens, okay, this is one mechanism. Now after the RBCs, okay, I'll just wait, use the red color. I don't know why I'm not using the red color. Okay, so RBCs, once they burst, I told you it releases HB. That's one thing it releases. But you know, all the cells are very very what do you say, very rich in potassium. Okay, so they're very rich in K plus ions. So K plus ions will also come out of the RBCs. Now you will ask me, why are cells, you know, rich in potassium ions? Obviously because we have learned that intracellularly, है ना, intracellularly K plus ions are more, while extracellularly, and that is in the tissue fluid or in the blood, sodium is more, as is evidenced by 0.9% NaCl, right? So extracellularly sodium is more, intracellularly K plus is more. अब K plus ज़्यादा है तो obviously जब ये cell फटेगा, when this cell will burst, what will come out? K plus will come out, है ना? So this will cause what? It will cause something known as hyperkalemia. Okay, तो इसको क्या हो जाएगा? Hyperkalemia. Now अब जब hyperkalemia होगा, this is very important. Okay, we're talking about fresh water. In case you have forgotten, we're talking about fresh water drowning, or also known as brackish water drowning. So hyperkalemia में this K plus ions will go and affect the heart. Okay, so for example, this is your heart. Just imagine this is the heart. I'm very bad at the drawing. Okay, so K plus ions will go and affect the heart. Now once the K plus ions goes and affects the heart, at individual heart cells, that is the myocardial cells, will get excited because of the K plus and get hyperpolarized or depolarized, or whatever mechanism that goes on in the cellular level, and it will cause something known as fibrillation. And because ventricles are the most prone to this, so it's also known as ventricular fibrillation. So because of the hyperkalemia, the person will undergo ventricular fibrillation. So what is the sequelae of freshwater drowning? So first of all, let's just revise. तो freshwater drowning में सबसे पहले क्या होता है? Hemodilation होता है. Hemodilation.
यानी कि पानी चला जाना ब्लड के अंदर. ब्लड इज फिल्ड विथ वाटर एंड बिकम्स डाइल्यूटेड बिकॉज ऑफ वाटर. देन दिस कॉजेज इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड. बढ़ गया ब्लड वेसल्स के अंदर. एंड इसके बाद दिस विल कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. हाउ? ज़्यादा बढ़ने से, अगर ब्लड ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई. तो मैंने पोटेशियम आयंस का एक थियरी बताया था. बट खाली ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ने से भी तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है. ऑब्वियसली देयर विल बी हायर लोड ऑन द हार्ट. क्या होगा? हायर लोड ऑन हार्ट. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है हार्ट पे, उसकी वजह से भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है. दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा. द सेम थिंग, हीमोडाइल्यूशन ओनली. डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा होगा, इससे आरबीसीज रप्चर कर जाएंगे. आरबीसीज रप्चर कर जाएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया. अभी आरबीसीज रप्चर कर जाएंगे तो के प्लस रिलीज होगा विच इज़ पोटेशियम आयंस. इससे भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स समथिंग नोन एज हार्ट फेलियर हैपन्स. क्योंकि हार्ट वोंट बी एबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, सो द हार्ट विल फेल. और अगर हार्ट फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? इंसान मर जाएगा. सो दिस इज द methodology of what? Of freshwater drowning. Now similarly saline water drowning है, यानी कि what do you say, सी वाटर ड्राउनिंग में क्या होता है? सी वाटर ड्राउनिंग में इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा. ओके, तो सी वाटर ड्राउनिंग में हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा. अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है यूजुअली? तो जो मान लो ये हमारा, और मैं गिव इट ब्लैक, या तो ये मान लो हमारा लंग है ना, और इसमें ये एल्वियोलाई है, राइट. अब एल्वियोलाई के अंदर क्या गया? एल्वियोलाई के अंदर पानी चला गया, राइट. अब ये पूरा पानी भर गया. बट ये पानी का जो सैलिनिटी है वो कितना है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ना. जो सैलिनिटी है वो 3% है इस बार, NaCl, यानी कि 3% ऑफ सॉल्ट इज इनसाइड द वाटर. एंड इसमें क्या है? 3% NaCl अगेन. अब क्या होगा कि एल्वियोलाई से जो NaCl का कंपैरिजन है ब्लड के अंदर वो कम होगा. क्यों? क्योंकि NaCl ब्लड के अंदर कितना है? 0.9% ओनली, है ना. अगर NaCl 0.9% है खाली, तो पानी ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर कंपेयर टू दी एल्वियोलाई. तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा? हाँ, पानी का फ्लो जाएगा फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वियोलाई. दिस इज़ द लॉजिक. ओके, तो ये ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ पानी का फ्लो जाएगा. अब अगर पानी का फ्लो ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ जाएगा तो क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, है ना. पहले तो एल्वियोलाई जो है, जो एल्वियोलाई है उसमें भर जाएगा सारा का सारा पानी भर जाएगा. ठीक है, ये सारा पानी भर गया किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर. दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जो ब्लड वेसल है, सॉरी अबाउट दैट, ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर जो खून है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट. खून का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा. सारा पानी एल्वियोलाई में खिंच गया, है ना. तो अब क्या होगा? इन दोनों की वजह से क्या कारण होगा? क्या क्या प्रॉब्लम होगा? आरबीसीज जो होंगी, आरबीसीज में से पानी बाहर आ जाएगा. अब पानी बाहर आ जाएगा तो आरबीसीज हो जाएंगी पतली, और इसी को बोलते हैं क्रेनेशन ऑफ आरबीसीज. क्या बोलते हैं इसको? क्रेनेशन ऑफ आरबीसीज. ओके, इसी को हम क्रेनेशन ऑफ आरबीसीज का नाम दे देते हैं. अब ये जो है एल्वियोलाई की वजह से क्या होगा? अब एक एल्वियोलाई तो नहीं है ना पूरे लंग्स में, बहुत सारे एल्वियोलाई है. सारी की सारी एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाएगा तो उससे हो जाएगा पल्मोनरी एडीमा. ठीक है, तो पल्मोनरी एडीमा भी हो गया. अब हमने दो चीज़ें पढ़ी. तो सॉल्ट वाटर में दो चीज़ें होती हैं. एक तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि पानी का निकल जाना और आरबीसीज का कॉन्सेंट्रेट हो जाना. एंड इससे क्या होता है? क्रेनेशन ऑफ आरबीसीज होता है. क्या होता है? क्रेनेशन ऑफ आरबीसीज. अगला क्या होगा? पल्मोनरी एडीमा. पल्मोनरी एडीमा, ठीक है. अब एक बात बताओ,
ये हीमो कॉन्सेंट्रेशन ये सब तो ठीक है, बट ओवरऑल क्या हो रहा था बंदे को? हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया क्यों? क्योंकि सारा का सारा पानी ब्लड लंग्स में जा रहा है ना, शरीर का सारा पानी, शरीर का सारा लिक्विड लंग्स में खिंच रहा है बिकॉज ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द लंग्स। तो इससे शरीर में क्या हो जाएगा? हाइपोवोलीमिया। और हाइपोवोलीमिया से फिर हार्ट पे फिर से इफेक्ट पड़ेगा। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी, तो उसी को क्या बोल देंगे? एसिस्टोल। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो लिक्विड या वॉल्यूम चाहिए ना। अब वॉल्यूम ही नहीं है तो कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी? तो इससे क्या हो जाएगा? एसिस्टोल। एसिस्टोल हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा। तो हमने दो चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। फ्रेश वाटर में क्या पढ़ा हमने? फ्रेश वाटर में फिब्रिलेशन हो रहा था हार्ट में। हार्ट में क्या हो रहा था? फिब्रिलेशन हो रहा था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बट जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में क्या हो रहा था? एसिस्टोल। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये दोनों मैकेनिज़म्स आपको समझ आ गए? ओके, धन्यवाद।